हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं फिश करी बनाने वाली हूँ इन माय मणिपुरी स्टाइल को nga अतोइबा थोंबा। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना कभी नहीं भूलना। एंड प्लीज़ लेट्स वॉच the video till the end. And from this video you can learn something about Manipuri style how I cook. Please. These are the ingredients that required for Atoiba Thongba fish curry. I have marinated the fish with turmeric powder and salt, king grass, and this meat masala I bought from Manipur. And here I need to give potato and green pea. That green pea which I have is already dry little bit और सूख गया है, सूखी सूखी लग रही थी, इसलिए मुझे इन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना पड़ेगा. So come on, let's see how I cook. And this fish I bought yesterday from the market. It's a local fish. We call in Manipuri, we call it puklaubi. And I have taken everything in textile. पहले कढ़ाई को गरम करना है, फिर उसके बाद मस्टर्ड ऑयल डालेंगे. और एक चीज़ मुझे आप लोग से शेयर करना था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर कि मेरा भी एक सपना है, एक दिन मुझे भी वही वायरल वड़ा पाव लेडी की जैसा मुझे वायरल हो जाओ पूरी दुनिया में, और मैं सबको खिलाऊंगा अच्छी अच्छी मणिपुरी डिशेज. और आजकल यूट्यूब में सारे लोग ब्लॉग बना के कमाने शुरू हो गया, और मेरा भी एक सपना है. मुझे भी आप लोग की इन लोग की जैसा मुझे भी मेरा सपना भी पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन विदाउट योर सपोर्ट हाउ आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल. सो फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट. अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना है. और आगे भी आई विल बी मेकिंग लॉट्स ऑफ वीडियो which it will be entertainment for everyone and which will be very interesting to everyone also. The next video will be very useful for everyone, especially for the YouTuber. But right now, since I don't have time with my toddler, it's a little bit struggling to make vlog. So whenever I have time, I always try my best to make something and entertain people. So now I have put the fish, and this serving spoon should not use much, otherwise it will spoil the shape of the fish. And this is a special technique for my cooking style. I always put ngari, fermented fish, in every meat curry or fish curry, so that it will kill all the dirt smell, means which we feel dirt smell. And jeera powder is compulsory to put.
It also helps the curry to look yummy. Sigi video se subscriber aigi friend kharana sum Manipuri de sum ngangadi moi khangde haye dudugi moi na request torakpagi aina jo maitai lon su English su Hindi su yanaraga sembane. I hope you will all not mind. And in next video, guys, I will be sharing channel with you from first try whatever I order from my daughter. Kapi namak dalne ka waka gayi. Looks yummy. Finally, dhania pata. So guys, thanks for watching my video. We'll see you in next video. Till then.